Hello students, welcome to physics class. In our previous lecture we were talking about the motion under gravity, or which is also called free fall. For such type of motions we had derived equations of motion, and today we'll discuss the graph corresponding to such motion. We are talking about xt graph, that is displacement time graph, velocity time graph, as well as acceleration time graph. And see here, these three graphs have been shown by me, and first graph I had plotted, that is acceleration time graph. Students, as you know that during free fall object moves under the effect of gravity alone, and its acceleration is equal to g, that is 9.8 meter per second square, or you can say 10 meter per second square. So as the value of acceleration due to gravity remains same, that is 9.8 meter per second square, so this graph comes out to be a straight line. First graph, see here, first graph, the acceleration remains same and its value is g. And why I had taken g in the negative direction? Because we had taken the consideration that downward direction is negative, as the object is falling, so it means the vectors acting in the downward direction, will take these vector as negative. Next one is velocity time graph. Since when object falls freely, it is under the effect of constant acceleration, it is speeding up, its velocity is increasing. So graph of velocity versus time is straight line. Increase in velocity is shown here. Third one is displacement time graph. It will be curved in nature, or you can say parabolic in nature, because we had seen that for uniform accelerated motion we got parabolic curve for displacement time graph. Next one is the Galileo law of odd numbers. It states that the distance traveled during equal interval of time by a freely falling body stands to one another in the same ratio as odd number beginning with unity, that is 1:3:7:9:11. See here, first of all we'll study this statement once more. The distance traveled during equal interval of time by a freely falling body stands to one another in the same ratio as odd number beginning with unity, that is 1:3:5:7:9:11. पहले हम इसे समझेंगे, इसका क्या मतलब है. Here we will talk about freely falling body. Freely falling body means u is equal to 0, and as it is falling freely, it's moving under the effect of acceleration due to gravity. Means it is moving with the acceleration equal to acceleration due to gravity, and it is taken as negative. Again we are using the same consideration that downward direction is negative direction. So what does Galileo law states? That if we find out the distance traveled in equal intervals by this body, means distance traveled in first second, then distance traveled in second, then distance traveled in third second, and in fourth second, and so on, then these distances lie in the ratio 1:3:5:7:9. कैसे हम प्रूव करते हैं? In last lecture we had derived the formula for freely falling body by using second equation of motion, that s is equal to -4.9 t square. ये कैसे फॉर्मूला आया था हमारे पास? वी हैड यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू 0 है, ए इज 9.8, सो एस इज इक्वल टू -4.9 टी स्क्वायर. तो गैलीलियो लॉ के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड्स. तो सो विल पुट द वैल्यू ऑफ टी एज 1. अगर हम 1 पुट करेंगे तो एस को हम क्या डिनोट कर रहे हैं? S1. S1 मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 seconds, that is -4.9 meter, and let it is y node, initial distance. I had called it as y node. Next one is at t is equal to 2 second, we will put t is equal to 2. So S2
distance traveled in second is equal to minus 4.9 into 4. If we compare it, it is with the previous one, it is 4 times y node. At t is equal to 3s, s3 is 9 y node. At t is equal to 4, s4 is 16 y node. At t is equal to 5, s5 is 25 y node. See here, if we find out distance in successive intervals, सक्सेसिव का मतलब क्या है कि फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में. अगर आप यहाँ पर देखें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड इज वाई नोड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड्स इज 4 वाई नोड. तो 1 में वाई नोड है और 2 सेकंड्स में 4 वाई नोड ट्रेवल कर रहा है. तो फर्स्ट ख़त्म होने के बाद सिर्फ अगर हम सेकंड सेकंड की बात करें तो सेकंड सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 3 वाई नोड. कैसे, वाई नोड तो पहले ही ट्रेवल कर चुका था, एक्स्ट्रा उसने कितना ट्रेवल किया है, 3 वाई नोड. ऐसे ही थर्ड सेकेंड में मीन्स 2 सेकेंड्स पर तो पहुंच चुका है, अब वो किस पर जा रहा है, थर्ड सेकेंड पर. इसका मतलब पहले हाउ मच इट हैज़ एक्वायर्ड, 4 वाई नोड, और अब कितना कर रहा है 3 सेकेंड्स के बाद 9 वाई नोड. एक कितना मूव किया, कितना एक्स्ट्रा जो है वो चल रहा है, that is 5 y node. So here I have shown distance in successive interval, that is y node, 3 y node, 5 y node. कैसे आ रहा है कि आप जो है इसको प्रीवियस वैल्यू से स्टार्टिंग प्रीवियस वैल्यू से आप क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे. लाइक 4 y node माइनस y node, 9 y node माइनस y node, 16 y node माइनस 9 y node, 25 y node माइनस 16 y node. Then it will give distances traveled in successive interval, and if we find out their ratio will be 1:3:5:7:9. Next is stopping distance. What do we mean by stopping distance? Students, when brakes are applied to a moving vehicle, it takes some time to come at rest, and obviously it travels some distance before coming to rest. How much distance is traveled by the object or by the vehicle before it come to rest is called stopping distance. कि आपने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दैट इज कॉल्ड इट स्टॉपिंग डिस्टेंस. आप यहाँ पर अगर इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, तो वी कैन डिराइव v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. सी हियर, सिंस ultimately vehicle stops, so v is equal to 0. U is the velocity at the time we are applying brake. So u square plus 2ax is equal to 0. So you can find out the value of x. X is equal to minus u square by 2a. Where x is called the stopping distance. Now next is distance traveled in nth second. We'll derive the distance traveled in nth second. Sometime it is also called fourth equation of motion. 3 equations of motion तो आपको पता है, कई बार हम इसको fourth equation of motion भी बोलते हैं. That is distance traveled in nth second. We know the formula, distance traveled in time t is equal to s is equal to ut plus half at square. Students, suppose we have to find out distance traveled in second. जैसे अभी हमने पीछे आर्टिकल किया है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स में भी मैंने आपको समझाया. सपोज यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकंड का डिस्टेंस कैसे आएगा, हम पहले फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकंड माइनस टाइम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकंड, तभी आएगा हमारे पास. फॉर एग्जांपल अगर हम पिछली शीट पर चलते हैं तो मैंने आपको कैसे बताया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकंड कैसे आएगा हमारे पास, 4 वाई नोड माइनस वाई नोड means distance traveled in 2 seconds minus distance traveled in 1 second. It will give us distance traveled in second. तो अगर हमें distance traveled in nth second बताना हो तो हम क्या लेंगे, distance traveled in n seconds minus distance traveled in n minus 1 second. Means सेकेंड के लिए हमें 2 माइनस 1 करना पड़ रहा है, तो nth सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, n माइनस 1. सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, Sn is distance traveled in n seconds. Sn minus 1 means distance traveled in n minus 1 seconds. And what is S? S is distance traveled in nth second. For example, अगर आपको बताना है distance traveled in 5th second, तो हम क्या लेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे distance traveled in 5 seconds and we'll find out the
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड्स, फिर हम उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, मीन्स S5 माइनस S4 विल गिव अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड. तो यहाँ पर हम nth के लिए बात कर रहे हैं. सो आई हैव टेकन t एज n एंड n माइनस 1. सो एस एन एथ इज इक्वल टू एस एन क्या होता है, वी विल यूज द फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. टी का वैल्यू क्या है n, सो विल राइट डाउन एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर. विल कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2. Similarly, Sn minus 1 will be un minus 1 plus half a n minus 1 whole square. Now using equation 2 and 3 in 1, हम पुट करेंगे s is equal to un plus half a n square minus time un minus 1 plus half a n minus 1 whole square. We will open these brackets and we will solve this values and ultimately we'll get the answer s is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. This is distance traveled in nth second. स्टूडेंट्स अभी जो पीछे हमने गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स डिराइव किया है वो हम इस फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हैं. हाउ, पुट u इज इक्वल टू 0 हेयर. आप u इज इक्वल टू 0 पुट करें, a इज 9.8 and we will put the value of values of n as 1 2 3 4 5 and so on, and you will see that you will get the ratio of distance travels as 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9 and so on. So you can also derive Galileo law of odd numbers from this formula. Try it yourself. It will be very easy for you. Reaction time. This is the last topic of this unit. Last statement rather we will study only in this topic. Reaction time. It is a time a person take to observe, think and